Hello guys, alright, welcome back to my YouTube channel Unboxing Google and Story Curriculum. In this video guys, we are going to discuss the electric charges and field. We have discussed the electric charges and field in the previous lecture, and here in this lecture we are going to start the electrostatics, potential and capacitance. That is the second chapter, basically the second chapter of physics class 12. So in this chapter we are going to discuss that. So make sure to subscribe my channel, that is Study KDK, and also like and share with your friends, and also support me. Thank you. So let us start this video. So first of all, what is the potential difference? Okay, potential difference, that is the potential difference between 2 points in an electric field is defined as the work done in bringing a unit positive charge from one point to another. Suppose there is a charge particle here and there is a charge particle here. The work is done to bringing this charge particle from one point to another. That is called as the potential difference. That is called as the potential difference. Okay, the work done in bringing the charge particle from one point to another, that is called potential difference. Okay, so let us move to the next, that is the formulae for electric potential. Formally for electric potential. Wait a second. Wait a second, guys, please. थोड़ा वेट करेंगे. ओके, सो यहाँ पर हम देखें. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. थोड़ा स्लाइड में चेंज आ गया था, इसलिए माफ कीजिएगा. ओके, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ चार्ज flow between two bodies when brought in contact. The positive charge always flow from the body of higher potential with that of lower potential. So यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, so obviously it will flow from the higher potential, from its higher potential to the lower potential. Okay, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. So यहाँ पर डिफिनेशन क्या है? The electric potential at any point in an electric field is defined as the work done in bringing a unit positive test charge from infinity to that point without acceleration or against the force of electrostatics. Okay, electrostatic, that is called as electric potential. If the work W is the work done in bringing the infinital positive charge from Q naught from the infinity to a given point, the electric potential V equal to W by Q naught. Electric potential at any point is also defined as the negative line integral of the electric field from infinity to a given point. That is, इसको याद करने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए. Okay, this formula is sufficient for this electric potential. The unit of electric potential, that is joule per coulomb or volt, and dimensional formula is ml2 t minus 3 a minus 1. This dimensional formula is very important. So यहाँ पर थोड़ा ओहो क्या हो रहा है? एक सेकेंड गाइस, प्लीज. दो नंबर स्लाइड में पढ़ रहे थे. सो ये जो वर्कडन होता है, इसका फॉर्मूला हम V इक्वल W बाई Q. इस फॉर्मूला को याद करना है, दैट इज फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, सो लेट अस मूव टू दी थर्ड स्लाइड. ओके, सो यहाँ पर पढ़ेंगे हम व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस. Potential difference, that is the potential difference between 2 points in an electric field, is defined as the work done in bringing unit positive charge from one point to another. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो मूव करने के लिए जो वर्क डन होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जो वर्क डन लगता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसको मैं यहाँ पर करता हूँ. Suppose here is a point. Suppose I am bringing a charge from infinity to a given point to this point. Then this work done
that is done to bring unit positive charge from infinity to a given point, infinity to a given point, okay, infinity to a given point against the electrostatic force, against the force of electrostatics, force of electrostatics, that is called as the electric, this is called as the electric potential. Then what is the difference between the electric potential और potential difference? तो potential difference में यहाँ पर एक specific हो जाता है कि it is the charge that is the work done against from one point to another point, but in case of electric potential it is from the infinity. Okay, this is the thing that you need to note down over here. Okay. उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट the formula for electric potential. Formula for electric potential is due to a point charge q at any point p equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r. इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है. This is very important formula. This is very important formula. देखो this formula is very important. B equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r. Next thing is that due to short electric dipole at distance r from its center, B equal to, this formula is for short electric dipole when x is very greater than when x is very greater than x is very less than a. Okay, x is very less than a. This is called as the B equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. At equatorial position B equal to 0. At general point having polar coordination r theta, क्या हो रहा है भाई, r theta with respect to center of dipole is V equal to 1 by 4 pi epsilon naught p cos theta by r square. उसके बाद ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस V equal to V1 plus V2 plus V3 Vn with sigma epsilon naught 1 by 4 pi epsilon naught P1 by R1. इस फॉर्मूला को सिंपली आपको यहाँ पर याद रखना है. क्या हो रहा है भाई, इस फॉर्मूला को यहाँ पर याद रखना. ओके, इस फॉर्मूला का याद रखना. नेक्स्ट थिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. Electric potential energy of a dipole in uniform electric field. The potential energy of a dipole in uniform electric field is equal to E equal to minus P cos theta, that is P minus P delta T. Quadrant is rotating the dipole in uniform electric field from inclination theta 1 to theta 2, that is called quadrant, that is equal to U2 minus E1 P cos theta 1 minus cos theta 2. If dipole is initially in stable equilibrium, if there is theta 1 equal to 0 degree, क्या हो रहा है भाई, sorry guys, finally its inclination is 0 degree, then theta, then work done, that is equal to work done, that is equal to P1 minus cos theta. Okay, it is work done, that is equal to. Next thing आगे बढ़ते हैं. That is the conductors and insulators. Conductor क्या है? Conductor are those substances which contain free charge carriers and so allow easy flow of current. Okay, जहाँ पर होते हैं free charges that can move and produce minimal current. क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री चार्जेस पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर स्पेसिफिकली हम बताएंगे दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. So that can flow from one direction to another direction so that the current will flow. In case of insulators, substances which contain practically no free charges. यहाँ पर no free charges, यहाँ पर कोई free charge नहीं होता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक लेते हैं. नो फ्री चार्जेस कैरियर्स एंड डू नॉट फ्लो ऑफ करंट. यहाँ पर फ्लो ऑफ करंट होता है, यहाँ पर फ्लो ऑफ करंट इन केस ऑफ कंडक्टर्स, बट इन केस ऑफ इंसुलेटर देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट. दैट इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर. आगे बढ़ते हैं. फ्री एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड ए कंडक्टर. फ्री एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड ए कंडक्टर.
The electrons are free charge carriers inside a metallic conductor, while positive ions fixed in lattice are bound charges carriers. देखो बोलने क्या जाता है यहाँ पर, देखो हम समझते हैं यहाँ पर अच्छे से। यहाँ पर एक ब्लैक स्क्रीन लेते हैं हम। देखो यहाँ पर क्या होता है कि इनके सब कंडक्टर्स यहाँ पर होते हैं हमारी फ्री चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव करते हैं। ओके, यहाँ पर एक कनेक्टर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं जिसकी वजह से करंट हमारी होती है प्रोड्यूस्ड। इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो करंट। ओके, करंट नहीं होता है। सो इन केस ऑफ कनेक्टर, तो प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिव चार्जेस, प्रोटॉन दे बाइंड along the lattice। ओके, यहाँ पर एक लाटिस होता है तो बाइंड बाइंड रहते हैं यहाँ पर बेसिकली। यहाँ पर क्या होता है, पार्टिकल नो फ्री चार्जेस carriers and do not follow। यहाँ देखो फ्री एंड बाउंड चार्जेस inside conductor, the electrons are free charge carriers inside a metallic conductor where positive ions इलेक्ट्रॉन तो मूव करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली मूव करेंगे करंट की तरह। लेकिन जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ये फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं। जो पॉजिटिव आयंस फिक्स्ड होते हैं, दे कांट मूव in a lattice are bound charges carrier, therefore they are called as bound charges carrier. Next thing, that is about dielectric and its polarization. This topic is important, I think, very very important, this topic from this chapter. Dielectric and polarization. The insulators are often referred to as dielectrics. Each dielectric is formed of atoms or molecules. Some dielectrics are positive and negative charges. Center coincide. Such dielectrics are said to be non-polar dielectrics, while some other dielectrics, the center positive and negative charges do not coincide. Such dielectrics have permanent electric dipole moment and are said to be polar dielectrics. For example of polar dielectric is water. For example of non-polar dielectric is carbon dioxide. While when a dielectric is placed in an external electric field, the center of positive and negative dipoles get separated or get further away, so that molecules of dielectric gain a permanent electric dipole moment. This process is called polarization. Okay, and this dipole is said to be polarized. The induced dipole moment developed for unit volume in an electric field is called polarization density. Numerically, it is equal to the surface charge density reduced at these faces which are perpendicular to the direction of applied इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पर क्या क्या बताया है, देखो डाइलेक्ट्रिक क्या है, it is form of the atom or molecules। There are two type of dielectric. First one is polar dielectric, second one is non-polar dielectric. In case of polar dielectrics, what is happening basically, the positive and negative charges, in case of non-polar, positive and negative charges they remain coincide, and in case of in some other dielectric the center of positive and negative charges do not coincide। यहाँ पर coincide नहीं होते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, they do not coincide। Such type of dielectric that are called to be polar dielectric, but in case of some non-polar dielectrics positive and negative charges they coincide। जिसका एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक इज वाटर। इसका एग्जाम्पल है H2O। इसका एग्जाम्पल है नॉन पोलर, एग्जाम्पल है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, when a dielectric is placed in an external electric field, the center of positive and negative dipoles gets separated। जब हम इस पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस गेट सेपरेट हो जाएंगे। जब इनके सब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर पास पास होंगे तो जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे ये सेपरेट हो जाएंगे ऑब्वियसली, सो दैट मॉलिक्यूल ऑफ डाइलेक्ट्रिक गेन ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ऑफ डाइलेक्ट्रिक गेट परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, इस प्रोसेस इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। आई होप इट इज क्लियर नाउ। एंड दी डाइपोल इज सेड टू बी पोलराइज्ड, एंड इस डाइपोल को हम कहते हैं पोलराइज्ड हो गया है। The induced dipole moment developed for unit volume in an electric field is called polarization density। यहाँ पर पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है, देखो
पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी, द इंड्यूस डाइपोल मोमेंट फॉर यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका जो वैल्यू न्यूमेरिकली सरफेस चार्ज डेंसिटी जैसे होता है, ओके, which are perpendicular to the direction of applied electric field, जो कि परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। बिहेवियर ऑफ, उसके बाद हम पढ़ते हैं बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक, दैट इज बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक, the behavior of conductor and dielectric in external electric field। यहाँ पर कंडक्टर है, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ पर इससे आता है नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ट्रैवल इनसाइड ए कंडक्टर। एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ट्रैवल नहीं करती, दैट इज E इक्वल टू 0। और इन केस ऑफ इंसुलेटर अलाइनमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर अलाइनमेंट होते हैं और पास कर जाते हैं, ऐसे पास हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर क्या होता है, 0 होता है। दिस रिजल्ट इन ए स्मॉल dielectric field inside a dielectric in a कोई डायरेक्शन, net field inside the dielectric is E by Q। इस रिजल्ट को याद रखना है। एक कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, एक नेट कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। A capacitor means contains two openly charged metallic or counter that is finite capacitance. It is a device that storing charges, maybe that store charges that जो कि वेरिड सिंपली बाय चेंजिंग सेपरेशन और मीडियम, जो कि चेंज हो सकता है बाय चेंजिंग सेपरेशन और मीडियम। The capacitance of the capacitor is defined as the ratio of molecular charge on either plate and potential difference across the plate। कहना यह चाहता है कि देखो कैपेसिटेंस होते हैं, capacitance of the capacitor defined as the ratio of molecular charges Q on either plate, that is C equal to Q by V, okay, and potential difference B across the plate। The unit of capacitance, that is this coulomb per volt, that is farad, okay। Combination of capacitors in series and parallel। जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल में क्या रिजल्ट आता है उसको देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन पर सिंपली कैपेसिटर ऐसे फॉर्म में ऐड जाते हैं, व्हेन कैपेसिटर कनेक्टेड सीरीज देन कैपेसिटेंस सीरीज गिवन होल। जब नेट चार्ज क्या होते हैं, Q इक्वल टू Q1 Q2 Q3 रिमेंस है। नेट पोटेंशियल क्या होते हैं, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाते हैं, और Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 यहाँ पर एडेड हो जाते हैं, यहाँ पर इक्वल होते हैं, यहाँ पर एडेड हो जाते हैं, और यहाँ पर पोटेंशियल सेम होते हैं। यहाँ पर इन केस ऑफ इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, एक व्हाइट स्लाइड लेते हैं हम, इन केस देखो, इन केस ऑफ कैपेसिटर सीरीज पैरेलल। सीरीज पर क्या होता है, इट इज एडेड लाइक दी पैरेलल कनेक्शन इन दी ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में जैसे पैरेलल में जैसे होते हैं, यहाँ पर सीरीज में ऐसे होता है, और यहाँ पर क्या होता है, समान होता है। क्यू यहाँ पर सेम होते हैं, भी डिफरेंट होते हैं। Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस ऐसे होते हैं, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इनके सब पैरेलल C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यहाँ पर सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस की तरह ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, दैट इज डिफरेंट बट द पोटेंशियल दैट इज सेम। दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ दिस, ओके, दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ दिस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स।
Capacitance and parallel plate capacitor. A parallel plate capacitor consists of two parallel metallic plates separated by dielectric. The capacitance given by C equal to K E naught K epsilon naught A by D. इसको याद रखेंगे. Where K is the dielectric constant, A equal to area of each plate, D equal to separation between the plates. Special cases क्या होता है when there is no medium between the plate, then K equal to 1, so C of vacuum that is equal to epsilon naught A by D. And space between the plate is partially filled with a medium of thickness L. यहाँ पर T thickness और dielectric constant K इंट्रोड्यूस किया जाएगा. कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? epsilon naught A D minus L plus 1 by K. Clearly, C is greater than C naught. C epsilon C naught. On the introduction of dielectric slab between the plates of parallel capacitor, capacitance decreases. इसको याद रखेंगे, इस रिजल्ट को याद रखेंगे. This result is important. इसको याद रखेंगे. Clearly, जब हम क्या हुआ भाई? Sorry. Hydrogen then introduction of dielectric slab between parallel plate capacitor. तो कैपेसिटेंस क्या होता है? डिक्रीज हो जाते हैं. जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाता है. आगे बढ़ते हैं. चार्ज इंट्रोड्यूस ऑन ए डाइलेक्ट्रिक में क्या चार्ज इंट्रोड्यूस होते हैं? चार्ज इंट्रोड्यूस ऑन ए डाइलेक्ट्रिक Q dash is equal to minus Q 1 minus 1 by Q, where Q is the free charge on a capacitor or plate. Okay. Energy stored in a charge capacitor. This topic is also important. Energy stored in a charge capacitor, that is Q equal to half CV square, Q square by 2C, half QV. This energy resides in the medium between the plates. The unit is joule. The energy stored for end volume of a charge capacitor is given by U equal to U by V half epsilon naught E square. Where E is the electric field strength. यहाँ पर E electric field strength होते हैं. The unit is joule for meter cube. That is energy यहाँ पर density हो जाता है. Okay. नहीं स्टोर फॉर यूनिट फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी हो जाता है बेसिकली. तो यहाँ पर इस फॉर्मूला की याद रखेंगे, यू इक्वल टू हाफ सी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2C. और इस फॉर्मूला की याद रखेंगे, एनर्जी स्टोर फॉर इन वॉल्यूम ऑफ चार्ज कैपेसिटर. ओके, ठीक है भाई, आगे चलते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. I hope you like this video. So if you like this video, then like, share and subscribe to my channel study K. Okay. So I hope you have revised this chapter very clearly from my video. So if you just like this video, and also if you want further more videos, then you can also do comment in my video, so that I can make this more videos. Okay. So I can make this make more video on this. Okay, so that's all what I wanted to say over here. Okay.